जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में, as you can see in the heading that I have already written over there, that how to find the values by using the formulas, that we are going to learn the method that how we will find the values by using the different kind of formulas. As you remember that in our last video that we have learnt about the two formulas. The first one was a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square. So that was the first formula that we have learned about, that how can we find that the left hand side or right hand side will be equals to with each other. So in our second formula, if you remember that was a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. ये कल हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें ये दो फार्मूलाज देखे थे। उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और उसको एक्सपेंड करके हमने देखा था कि राइट हैंड साइड किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। सो टुडेज लेक्चर इज़ about these formulas, that if the values of some expressions are given, that how can we find the different things. So just we take an example of anything that we will suppose that the two values are given and we are going to find the third value. Just keep these two formulas in your mind and we will start with some kind of values that we are going to suppose that if a plus b is equal to, you can say that it's about 9 and ab or a minus b, sorry, is equal to 3. ये हमने expose कर लिया है that if a plus b is equal to 9 and a minus b is equal to 3, then find the value of a square plus b square and ab. So if a plus b and a minus b are given and we have to find the values of a square plus b square and ab, then what we will do, that first we have to think about that a plus b and a minus b and a square plus b square and ab, which formulas that these expressions are coming in. So अगर आप देखें तो जो मैंने ऊपर फार्मूलाज लिखे हुए हैं तो उसमें अगर आप ये चीज़ देखें कि आपको a plus b, a minus b
दोनों फार्मूलाज में दिया हुआ है। तो पहले तो हमने ये देखना होता है कि व्हाट वी विल हैव टू फाइंड। सो फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। सो दीज आर ऑल थिंग्स आर कमिंग इन दीज टू फार्मूलाज। जैसा कि यहाँ पे अब a प्लस बी आपको दिया हुआ है इज़ इक्वल टू 9 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फर्स्ट question we have to find a square plus b square, and in second one we have to find a b. So ये चीज़ें जो आपको गिवन है एंड जो आपने फाइंड आउट करनी है, उनको अगर आप देखें तो ये इन दो फार्मूलाज में आ रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल just listen carefully that first of all we have to look on these things that are given in the question, and secondly what we will have to find. So ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और फिर उसके मुताबिक आपने वो फार्मूला जो है वो देखना है कि किस फार्मूले में वैल्यूज़ लगा के तो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आप फर्स्ट फार्मूला में देखें तो आपको a प्लस बी मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। सो इफ़ यू सी दैट value of a plus b is given, a minus b is given, and in first question what we will have to find, a square plus b square. So in first formula आपके पास ये तमाम कंडीशंस आपको मिल रही हैं। सो जैसा कि ऊपर हेडिंग मैंने लिखी हुई है, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ बाय यूजिंग द फार्मूला। सो द फर्स्ट फार्मूला ये है। तो फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So by putting the values in this formula, so आपको a plus b given है, a plus b is equal to 9. So we will put 9 in the place of a plus b. So यहाँ पे 9 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस a माइनस बी। आपको a माइनस बी गिवन है, सो a माइनस बी की जगह पे आप 3 रख देंगे और वो स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू a square plus b square. That's the thing we have to find, a square plus b square. So we will write as it is a square plus b square, because this value, this thing we will have to find out. So let's see what happens in next step. So 9 square means 9 multiplied by 9 or 9 multiplied by 2 times. So 9 9s are 81 plus 3 whole square is equal to 3 whole square means 3 multiplied by 3 equal to 9, and 2 into a square plus b square. Remember that 2 is multiplying with this expression. So नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So what we will have to find in our first question, a square plus b square. So if you see that
here is the a square plus b square, but there is a number that is multiplying with this expression, so we will have to think about that what we're gonna do with this 2. So ये 2 इसके साथ यहाँ पे multiply हो रहा है इस expression के साथ, that expression that we will have to find the value of this. So 2 is multiplying with this expression. So इस 2 को अगर हम उठा के equals के दूसरी साइड पे ले आते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा. सो 90 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो 245 टाइम्स 245 टाइम्स 90. सो 245 से जब 90 का 2 डिवाइड करेगा तो आपके पास आंसर 45 आ जाएगा. सो दैट्स द 45 इज़ द आंसर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो अगर आप देखें तो यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45. That was the thing that we in our first question that we have to find a square plus b square. So that's the a square plus b square. 45 is equals to a square plus b square. Or we can write that a square plus b square is equals to 45. So that's the way that we can find the values by using the formulas. And now if we see about our next question that we have to find the value of AB. So I'm using the same page that you can understand the things. So now we have to find the value of AB. So अब क्या करेंगे, AB means कि हमने फार्मूला देखना है कि AB किस फार्मूले में आ रहा था. So in our second formula where these expressions are subtracting with each other, these are equals to 4AB. So AB we have to find. So it means the second formula we will use to find the value of AB. So just write down here that in our second part that by using this formula a plus b whole square minus into a minus b whole square is equal to 4ab. So I'm going to write that formula over here, that a plus b whole square minus into a minus b whole square is equals to 4ab. So same again, I'm using this half page because the first question I have solved over here, so you can see step by step that how I'm going to solve the second question, second portion of the question, that how we can find the value of AB. It's the same process we will have to do that we have done over here. So see carefully and listen carefully that a plus b, by putting the values, what we get. So what was the value of a plus b? If you see over there, a plus b is equal to 9. So again I'm going to put 9 over here, whole square minus what was the value of a minus b? If you remember, that was the 3. So 3 whole square is equals to 4ab. So same process we are doing
that we have done in this example. But the difference is what is the difference? The difference of the sign, because there was the sign of positive plus the values was added with each other, and now the sign is minus and they will subtract with each other. So 9 square means 81 minus 3 square means 9 is equal to 4ab. So if you subtract 9 from 81, that will become 72 is equals to 4ab. So what we have to find? We have to find the value of ab. That's why we are using this formula which subtract which these expressions are subtracting with each other, and 4ab over here. So 72, we have got the answer 72 by subtracting these two values. So if you see, the question was given that we have to find AB. So 4 is extra with the AB. So what we're gonna do, that 4 is multiplying with AB. So ये 4 जो है उठा के जब इक्वल्स के दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो वो 72 को डिवाइड कर देगा. So 72 divided by 4 is equals to AB. So अब ये डिवाइड किस तरीके से करेगा? 4 how many times are 72? 4 ones are 4, 3 32, 4 8s are. So 18 4s are 32, or 4 18s are 32. So 18 is equals to AB, or you can say that AB is equal to 18. So in these two examples, we have found the values of AB and A square plus B square and the value of AB. So in this example, if you see that what was the question, that find the values of these two things, A square plus B square and AB. So these formulas we have used to find the values. So after this process, that we have found the values of A square plus B square is equal to 45, AB is equals to 18. So I think you have understood the thing, that how we can find the values by using the formulas. और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई एग्जांपल्स के साथ जो है वो कुछ नया लेके आएंगे. और उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अपना ध्यान रखिएगा. खुदा हाफिज़.